खर्च करोगे 8,000 यूरो। अब मुझको ये नहीं बताओ 8,000 यूरो कितने रुपए होता है, मुझको नहीं मालूम, राइट, बट आई एम प्रीटी श्योर यू कैन वर्क इट आउट। जर्मनी और फ्रांस चले गए, जर्मनी में और फ्रांस में इतनी नौकरियां हैं, राइट, ओके, यू कैन इजीली गेट योर पार्ट टाइम जॉब एंड पे दिस 8,000 यूरो। 8,000 यूरो कुछ नहीं है अगर तुम काम कर रहे हो, आराम से तुम 1,000 यूरो महीने बना सकते हो बस डिलीवरी ड्राइवर बन के, समझे, राइट। So but then think of it, right, the moment you finish your degree, right, you've gone into a job as CA, and then within 2 years she's calling her senior DevOps engineer, okay, and there the salaries I told you are between you're reaching 80,000 to 120,000 euros, yeah. So that is to me that is the best formula, okay, but जो लोग कहते हैं नहीं यार मुझे पाकिस्तानी में बैठना है, कहीं नहीं जाना, ठीक है, पाकिस्तान बैठना है, बैठो रहो, right, okay. So दूसरा जो है formula is get your certification in Pakistan, get your internship, right, get experience, right, do freelancing to earn extra income, right, and get a job within Pakistan market. लेकिन पाकिस्तान मार्केट में जो है सैलरी जो है I think after 3 साल के बाद तुम होगे तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए पर, right. I can't see going above that. So, right, or जैसे तुम्हारे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, apply for remote roles worldwide, yeah, that would be the other formula, समझे, if you do not want to invest in your career. लेकिन ये जो formula जो मैं तुमको दे रहा हूँ, you know, तकरीबन 5 साल तो लग जाएगा, you know, and you will probably, yes, you know, maybe 6 साल बाद तुम you'll be earning maybe 1 करोड़, समझे। So जिस बंदे को कमाना है 2-3 करोड़ 3 साल के अंदर, मैं कहता हूँ फॉर्मूला जो है इस लेडी का लो, समझे, राइट, शी इज यूज द राइट फॉर्मूला। और अगर तुम जाके लिंक्डइन पे देखोगे यूके में मेजॉरिटी इंडियंस ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। मैं देख रहा हूँ यूके में 100 यूनिवर्सिटीज हैं और तकरीबन यूके में आई थिंक तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर साल इंडिया से, समझे, और पाकिस्तान से मुश्किल से भी 1000 लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, समझे, right, but Indians ने ये फॉर्मूला देख चुके हैं, Indians know that this works and they're using it, right, okay. So मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है यूके आने के लिए, you don't need to come to UK, Germany, Europe, there are 26 European countries, right, और उसमें जर्मनी और फ्रांस में बहुत सी नौकरियां हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और फीस बहुत कम है, और कुछ यूरोपियन मुल्क में फीस प्रैक्टिकली है ही नहीं, समझे, लेकिन वो एक चीज पूछती है, प्लीज लर्न द लैंग्वेज, राइट। सो मैंने कभी नहीं देखा जो 50% जो इंडियन से जो मेरी बात होती है हर रोज, राइट, मैंने किसी इंडियन को नहीं देखा, ठीक है के पास एक्सेंट है, लेकिन हर बंदा अंग्रेजी बोल सकता है आराम से। अंग्रेजी इज द ऑफिशियल इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इन इंडस्ट्री, राइट। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ अंग्रेजी से लोग भागते हैं, राइट, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट वो अंग्रेजी जो है इज गोना कॉस्ट यू 1-2 करोड़, समझे। तो अगर तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी प्रॉपर्ली, इट्स गोना अफेक्ट यू फाइनेंशियली, राइट। तो और जो बंदे जिनको जर्मन आती है और अंग्रेजी आती है उनकी तो वैल्यू तो बहुत है, राइट। सो यू नो, और जर्मन सीखने के लिए जर्मनी ऑफर करती है टू कम 1 साल पहले फॉर अ जर्मन कोर्स, right, which is hardly any euro. So इसी तुम जर्मनी आ गए, तुम जर्मनी काम कर सकते हो, right. So don't just look at UK as a way out. The UK जो है, of course, UK जानती है उनका वीजा का वैल्यू, तो वो उनकी जो यूनिवर्सिटी ज्यादा पैसे चार्ज करती है. So look at the option here, yeah, that you have, right. You know, so and I told you, take advice from people who are in this industry, who see this every day, which is me, for example, yeah, right. So but the data is all there. I'm not showing you any story. I'm showing you the data right in front of you, right? So please understand this, yeah. Okay. Is there anything you think? Oh, Junaid brought a good question. Canada maybe work permit खुल गया. Canada में work permit खुल गया, USA में भी work permit खुल गया, ठीक है.
लेकिन मैंने इसलिए कनाडा और यूएसए इसलिए नहीं बात करी, इसलिए मेरा एक्सपर्टीज कनाडा और यूके यूएसए में नहीं है, राइट। लेकिन मैंने आज क्लास से पहले आई वेंट एंड चेक्ड, कनाडा का बहुत से इंडियन जा रहे हैं, यूएसए भी बहुत से जा रहे हैं। तो यस, कनाडा यूएसए ऑल्सो। लेकिन मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कनाडा में। कनाडा में इतनी नौकरियां नहीं हैं जितनी यूरोप और यूएसए में है, राइट। सो कनाडा में मैं देखा है बहुत से लोग जो गए कनाडा वो बहुत सी लो लेवल नौकरियां कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट कनाडा, बिकॉज मेरी कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन इंटरनेट न्यूज, नथिंग, आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड। यूएसए में मेरे काफी लोग मेरे यूएसए में हैं, और वहाँ क्या है, डिमांड इज स्टूपिड हाई, या स्टूपिड हाई, राइट, ओके। लेकिन आई थिंक जनरली स्पीकिंग पाकिस्तानीज को यूएसए जाने के लिए काफी मुश्किल होती है, वीजा बेस्ड और स्टूडेंट वीजा जो काफी लंबा प्रोसेस है, राइट। मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, राइट, जो तुम 2-3 महीने के अंदर you can get into Europe. You know what I'm saying? I don't like long processes. मैं वो बंदा हूँ जो भागता है long processes से, समझे? I like something easy, right? और यूरोप जो है to me is the easy place, right? यूएसए में दूसरी प्रॉब्लम है। यूएसए में अगर तुम चले गए यूएसए, वहाँ ग्रीन कार्ड जो है बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट है, इसलिए इतना उनका कोटा सिस्टम होता है ग्रीन कार्ड का। So, but then I'm not an expert in US and Canada, so I can't really tell you too much, right? We can please look at Canada and USA. Australia भी देखो, Australia भी बहुत demand है, right? So, the point I'm trying to make to you, do you want to earn 2-3 crore or do you want to be earning 4 lakhs in 3 years? समझे? You know 4 lakh मतलब कितना होगा साल में? 50 लाख या 2-3 करोड़ कमाना, you know what I'm saying, right? So it's quite a big difference, right? And because it will affect your future life, समझे? Right, so इसलिए तुमको ये decision, you need to plan it. Yeah, I mean, I can understand हर बंदा बस कहता है, जैसे मैंने क्लाउड फाउंडेशन करा, सीधा मुझको नौकरी मिल जाए, मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, हाँ तुम कमा रहे हो, अगर तुम सिर्फ 50,000 रुपए कमा रहे हो, राइट, उस 50,000 रुपए में how far are you going to go, right? Okay, all the opportunities हैं, right? Spain में भी Spain में इतनी opportunity नहीं है, because so basically you can go to any European country, right? एक बार तुमको European visa मिल गया and you go become a citizen, you don't have to go anywhere else. और दूसरी चीज मैं भूल गया मेंशन करने के लिए, आयरलैंड जो है वो भी बहुत काफी सस्ता है, और वो भी काफी दिस थिंग। लेकिन आयरलैंड में सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अगर तुमको आयरिश पासपोर्ट मिल गया, right, then that still doesn't allow you to work in Europe, right? European passport के साथ जो फायदा है, तुमको 26 countries की work permit मिल गया, by getting one country's nationality. So that is the thing, advantage. So Mohammed Gohar says, is there opportunities internship or job remotely? Okay, that's the next thing I'm going to talk about. Sorry, I'm going to talk about that next thing, but I'm going to hand over to Atiq. Atiq मेरा intern होता था पाकिस्तान में, and before I hand over to Atiq, Daniel, Italy also has AWS data center. AWS has got regions of pretty much everywhere. Dubai में भी है, बहरीन में भी है, इंडिया में भी है, समझे? फिर बेचारा पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है, right? दूसरा बंदा मोहम्मद इकराम पूछता है, can I start age at 37? Yeah, 37. मैं 55 हूँ, right? You can start age in this world today. Age is not सिर्फ पाकिस्तानी सिर्फ देखते हैं एज को, वेस्ट में हम लोग एज को भूल गए हैं. We don't care what age you are. We care what skills you have. And अगर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो या जर्मन बोल सकते हो, समझे? Right? If you can't speak English and German fluently, then पाकिस्तानी में better हो. So Atiq, I would let Atiq speak. Atiq,
He used to be my intern before, and now he's working in the industry. I want him to tell you his journey. So तुम थोड़ा सा उसका भी experience लो, समझे? And then I'll come back, yeah, on this. So I'll let you think, start and हाँ उर्दू में बात कर रहा हूँ, please. So
So one of the questions somebody asked, are you doing job in Pak or UK? I think abhi Pakistan mein kar rahe ho, isn't it? Right. So yeah, go on. Bolo. Yeah. So the question Muhammad put right, how do you make a CV? That I'm going to show you. Right. So many the question had while I think is अगर तुमने certification करा होता like architect or developer or system ops, you would be in a better position than you are today, isn't it? Yeah. So यही तो मैं आप लोग को भी कह रहा हूँ that job is good. इसलिए सब एक बंदा कह रहा है मैंने cloud foundation करी है और मुझको job नहीं, you know, so पहली चीज है, you know, I would love to know that तुमने cloud foundation करा है, लेकिन cloud foundation जो है काफी first step है और मैंने हर webinar में कहा है you need to understand DevOps and architecture. Would you agree with me, I think, that DevOps and architecture is very important? Yeah. भाई आवाज सही आ रही है? हाँ आवाज सही आ रही है. Yeah. So पहली चीज जो मैं तुम लोग से कह रहा हूँ, अगर तुमने सिर्फ क्लाउड फाउंडेशन करा है, then that is the starting journey. Now, क्लाउड फाउंडेशन में पाकिस्तान में शायद तुमको नौकरी मिल जाए इंटर्नशिप, लेकिन globally it's going to be a problem. Just your one step. Yeah. So the one thing I'm going to show you, right? I'm just going to bring up another link. तो लोग पूछ रहे हैं सीवी हर बंदा सीवी का सोच रहा है. मैं कह रहा हूँ पहले स्किल सोचो. हाँ. लेकिन सीवी बनाने चलते हो, ठीक है सीवी बनाओ, अभी दिखाता हूँ. एक मिनट कहाँ गई मेरा, एक मिनट. एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ. तो ये एक इंडियन वेबसाइट है, right? I'm going to put the link in the chat so you guys can access it. So ये okay, so ये AWS Solution Architect की example है, Asma Fatima, right? Now if you look at her CV, right, so you'll see that उसने पहली चीज जो लिखी है यहाँ ऊपर is she's a AWS certified solution architect. Yeah, right. Now she has 11 years of experience, but actually you guys don't have 11 years experience. But you, from a CV, you can see that what she's targeting. She's targeting code deploy, code build, code pipeline, right? Virtual private cloud, VPC environment. You know what I'm saying? So she's put that in her main thing, but she knows that this is what customers want, right? Then she's in the profile summary, she's talking about cross-account deployment, IAM roles, you know what I'm saying, right? So she's talking about security, right? Network systems. She's talking about Docker, containers-based deployment someday. So what she's doing here is she's putting everything which is important in the job market, making sure that she covers all those elements. Then core competencies, you know what I'm saying? Just put configuration management, security foundation, cloud infrastructure, right? AWS services, Elastic. So again, you can see what she's targeting. And then
she's put here, work with DevOps and SecOps engineer. You know what I'm saying? So she's putting all the right keywords, right? So तुम्हारा जो पहला पेज जो तुम्हारा CV का है, right, should cover your skill sets related to the type of job you're applying for. समझे? Right. Now, जो एक और question बंदा पूछता है is, can I get internship remotely? Right? Okay. So this is a very good question. Junaid का जो question है बहुत अच्छा question है. Right? So let me show you now. Right? How do you do that? So how do you get internship remotely? So let me. ये जो वेबसाइट है ये देती है इंटर्नशिप रिमोटली, समझे? इसकी जो लिंक अभी मैं डालता हूँ चैट में। अब इस साइट का जो फायदा जो है इज दैट ये जो कंपनी जो रिमोटली करती हैं, 5 to 6 आवर्स जो दे रही है इंटर्नशिप, राइट? तो देखो सारी बड़ी कंपनीज हैं, वीजा, जेपी मॉर्गन, इन्फोसिस, ठीक है, रेड बुल, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन, SAP USA, समझे? ये सारी ऑफर कर रही हैं इंटर्नशिप remotely, yeah? Right. So if I, for example, go, company, when मैंने एक कंपनी ढूंढी थी आज, ऐसी देख रहा था, in every area anyway, maybe this one, pull it up. So ये जो है, this is mostly in Python and C++, लेकिन मैंने ढूंढी थी एक जिसमें cloud की थी, it came under software engineering, लेकिन I can't remember कहाँ. So anyway, so जिसको चाहिए international internship, right? ये free है, right? Okay, सारी free है, okay? And it provides that virtual work experience. So अगर तुमको अपने CV अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो उसका भी सोल्यूशन है, समझे? बिकॉज कंपनीज जो है इतनी डेस्परेट है, दे आर विलिंग टू टेक वर्चुअल इंटर्न्स, समझे? राइट? ठीक है, सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट यू गेट योर एक्सपीरियंस, राइट? So I don't know. I think, have you ever come across this before? So is that interesting? You think? What do you think of it? तो ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में ये चीजें क्यों लोगों को नहीं मालूम? हाँ? Right. वो जो मैं कह रहा हूँ, इसका solution क्या है? You know what I'm saying? Right? You know? So राजा, तुम भी हो chat में, so please राजा, अगर तुम सुन रहे हो, you know, you need to push these people, yeah? Right? इसलिए ये चीज जो है, people should know. मुराद, एक्चुअली मैं ये जो आपके इंटर्नी है, ये जो आपके इंटर्नी है, इनको मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली आज इनके साथ जो सुना है मैंने, तो जो मैंने चीज रियलाइज किया है, जैसे आपको पता है कि आप स्पेंड 20 years देयर इन जीके एज वेल, तो इट्स द एटीट्यूड एक्चुअली, बेसिकली जो एटीट्यूड इस बच्चे का है, दैट्स एक्चुअली वेरी 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 पॉजिटिव. सबसे पहली जो चीज आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में जो लर्न करना चाहिए, कि हम, जैसे उस बच्चे ने कहा कि मैंने प्रैक्टिशनर किया हुआ है या वो फाउंडेशन किया हुआ, जॉब नहीं मिल रही, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि उसका कितना एक होमवर्क है. हमारी एक जो सोसाइटी में एक हैबिट सी बन गई है कि हम हर चीज जो है हमें रेडीमेड चाहिए होती है. आप अभी अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत भी, आई एम श्योर अगर उसको AWS का नॉलेज नहीं है, इंटरनेट इज एक्चुअली इन एवरीबॉडीज रीच, तो हर बंदा इंटरनेट से सर्च कर सकता है कौन सी जॉब अवेलेबल है. आई मीन देयर आर जॉब साइट, इवन पाकिस्तान में जॉब्स हैं,
ठीक है, तो उसको ये जरूरत ही नहीं थी ये क्वेश्चन पूछने की। तो हमारा जो सबसे पहले एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स द मार्केट। हमें खुद से बेसिकली ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि देयर इज अ ह्यूज न्यू वर्ल्ड आउट देयर। ये जो बाउंड्रीज हैं वीजा की और सारी, जैसे आपने बताया, ये रिमोट वर्क ने ये सारा खत्म कर दिया। तो हमें बेसिकली वी नीड टू लुक अब्रॉड रादर देन के ये जो हम रील्स देखते हैं टिकटॉक पे और ऐसे फेसबुक पे टाइम जाया करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं समझता हूँ कि एटीट्यूड वाली चेंज होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, एंड यू शुड मेक अप। ये जो सोशल नेटवर्किंग है, जैसे एक बहुत पुरानी बात है कि आप अगर 5 मिलियनेयर के साथ उठते बैठते हो तो छठे कल को आप होगे। तो ये जो सोशल मीडिया पे भी आप कनेक्शन बनाते हैं रादर देन के एमे रैंडम लोग जो आप ऐड कर रहे होते हो कि जो आपको थम्स अप भेज देते हैं, हाँ जी मेरा वीर बड़ा फिट लग रहा और ऑल दैट, उसकी बजाय प्रोफेशनल लोगों को फॉलो करो, उनको ऐड करो, इंटरनेशनल लोगों को ऐड करो। देयर आर सो मेनी पीपल, आई मीन कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दोज आर एक्चुअली दे आर जस्ट टू हेल्प पीपल, राइट। तो आप अपना नेटवर्क उनके साथ बिल्ड करो के रादर देन की जो है, ताकि कल को अगर आप 5 प्रोफेशनल के साथ होंगे तो छठे प्रोफेशनल आप होंगे। ठीक है, आप जॉब की जैसे साइट है, ब्लेम करना हम छोड़ दें कि जॉब नहीं मिल रही। पहले कि आप अपने आप को उस लेवल पे ले आओ। ठीक है, कोई कंपनी आपको जॉब देती हुई फेवर नहीं देती। कंपनी इज जस्ट अ नेम, दे नीड पीपल आर द वन हु एक्चुअली मेक दैट कंपनी व्हाट दैट इज। कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी ने कोई फेवर नहीं देनी, आप उसकी जरूरत बन जाओ। आपके पास वो स्किल्स हो कि कंपनी आपके पीछे हो। ये भाई बता रहा है ना, सिलिकॉन वैली से इसको आ गई अफोर्ड, राइट। एंड यू नो इट, आवर जो सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ बेसिकली। जो मैंने एक और चीज रियलाइज किया मुराद साहब के, जो मैं काफी, क्योंकि इट्स बीन 3 years नाउ आई मूव टू पाकिस्तान, एंड यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं बहुत ज्यादा, तो उनका मकसद दोज आर जस्ट लाइक स्कूल। जैसे कि उनका काम है फीस लेना, पढ़ा देना और खत्म कर देना। तो जब भी हम इवन करियर डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा भी कर रहे हैं, और वेरी फ्रेंकली मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी हमारा जो आज का है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जेने से ही कोर्सेज करो या जेने से ही सर्टिफिकेशन करो। डू इट वेयर एवर यू वांटेड टू डू। ठीक है, हम मुराद आपको जो कह रहे थे कि आप जर्मनी जाओ या यूरोप जाओ, वी आर नॉट रियली गोना गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट वी डू वांट कि हमारे पाकिस्तानी जो है दे शुड मेक प्रोग्रेस एज वेल। ठीक है, तो यही मेरी एक शॉर्ट सी एडवाइस आप लोगों के लिए। Thank you very much, Murad and the team, for giving me this opportunity to speak to these wonderful people. Thank you. तो पहली चीज जो है, बिफोर यू मेक योर सीवी, पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, और लिंक्डइन प्रोफाइल में मेंशन तुम क्या हो। डोंट से मैं ग्रेजुएट हूँ या ये चीज। नो, इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एम्प्लॉयर देखना चाह रहा है तुम्हारा जो मेन हेडलाइन जो है क्या है, समझे। ठीक है, सो गेट दैट। देन जो समरी है उसमें अपने मेन स्किल्स डालो, राइट। नाउ अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब उस वर्चुअल एक्सपीरियंस जो है तुम जो मैं तुमको दिखाई है, पुट दैट वर्चुअल एक्सपीरियंस देयर, राइट, उस कंपनी का नाम, राइट, एंड से व्हाट यू डिड देयर, राइट। ओके, सो यू गेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, मेक श्योर योर सर्टिफिकेशन, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है, मेक श्योर वो सर्टिफिकेशन है, एंड देन स्टार्ट कनेक्टिंग टू पाक बिजनेसेस, राइट, जो पाक की जो आईटी कंपनीज हैं, राइट। यू कैन गेट द लिस्ट फ्रॉम पाशा की वेबसाइट पर जाओ, तकरीबन 1800 कंपनीज हैं, उनके जो मेन रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं या आईटी के जो हेड्स हैं, उनसे ट्राई कनेक्टिंग विद देम, liking their post, sharing their post, start talking AWS on LinkedIn. This is LinkedIn web बहुत powerful tool है, so you should start doing that. Don't spend your time on Facebook. Facebook में you will not find the people who will employ you. LinkedIn पे you will find people who will employ you. और दूसरी चीज है, जब बंदा आपके सीवी देखता है, अगर वो बंदा इंटरेस्ट आपकी सीवी में, he will probably go and look at your LinkedIn profile और देखेगा तुम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो LinkedIn पर। जैसे मैं खुद एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं भी यही करता हूँ, समझे। जैसे ही कोई सीवी आती है, मैं जब राजा साहब भेजते हैं मुझको सीवी,
मैं पहली चीज राजा साहब से पूछता हूँ, मुझको उसका लिंक्डइन प्रोफाइल भेजो। मैं पहले उसको लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ, फिर उसकी सीवी देखता हूँ, समझे। इसे मैं देखता हूँ अगर लिंक्डइन प्रोफाइल पर उसके पास एक्टिविटी नहीं है AWS रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या जो कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ, then I don't bother with CV। से मैं जानता हूँ यार अगर बंदा लिंक्डइन पर नहीं अपना को वो बना रहा है तो सीवी मुझको क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, समझे। तो पहली चीज वो देखो, ठीक है। अब लिंक्डइन प्रोफाइल बना दी और फिर उस लिंक्डइन प्रोफाइल से यू नीड टू हैव द राइट कनेक्शन, तो स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल, राइट। और नेचुरली जो लोग ट्राई टू कनेक्ट टू इन्फ्लुएंसर्स, राइट। तो हमारी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत, पूरी दुनिया में है, समझे। उनके साथ इसलिए मैं देखता हूँ इंडियन स्टूडेंट तो ये करते हैं, दे गो कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंसर्स एंड देन फिर इन्फ्लुएंसर्स के जो कमेंट्स होते हैं, दे पुट कमेंट्स, गुड कमेंट्स, अबाउट बंदा देखता है यार ये बंदा सोच रहा है, about it. So this is how you market yourself. It's because तुम एक product हो, right? You are a product and you have to market yourself. So don't think of yourself as not a product, right? Think of yourself that, Murad is a product, he needs to sell himself, right? So that's the way it works, yeah? Okay. So LinkedIn is a must. Then start working on the CV. Now CV जो है, I told you, CV में मैं आपको already दिखा चुका हूँ उस link में that the skill sets you need to put. लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को, वो सोचते हैं यार मैं क्या डालूं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे। तुम ऐसा करो, समझे। You go to a very big website like dice.com, right? I will put that link also in the chat. So Junaid Pushta, can we add other experience, like we have 5 years in WordPress? Yes, of course you can, right? Any programming, coding, web development skills you have, put everything in there, but make sure the AWS side is prominent. Okay, so यहाँ talk करो AWS. So don't look at the job just senior, yeah, इसमें senior नहीं हो, DevOps manager की job नहीं हो, right? Okay, अगर उसको Python आती है, then you should look at this job also, right? So ये AWS Solution Architect remote role है. I would look for DevOps roles more, right? ये tech lead is too senior. Java data engineer. I'm trying to find a job like AWS engineer. Yeah, this is perfect job. But of course you have to have the right skills. So freelancing देखते हो ये बंदे मांग रहे हैं, CDK, right? AWS container. So now you know that ये जो सारी keyword should be in my CV. लेकिन अगर तुम्हारे पास experience नहीं है इन चीजों का, right? Don't put it on your CV. So फिर तुम झूठ बोल रहे हो, समझे? अब मैं बताता हूँ कैसे, how do you not झूठ क्यों नहीं, कैसे नहीं बोलो, समझे? Well, that's also easy. दिखाता हूँ तुमको. So you go to this website. कहाँ देगा website? ये है AWS वर्कशॉप्स की वेबसाइट है, समझे। इस वर्कशॉप में अब अतिक बताएगा तुमको। अतिक मैंने तुमको कैसे पढ़ाया, मैंने तुमको तो नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने तुमको कैसे एक्सपीरियंस दिलवाया। अच्छा, ये एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे कुछ आलिया लोग अगर हैं तो वो पूछ भी रहे थे कि दे वांट टू डू सम प्रोजेक्ट, सो दिस वुड एक्चुअली हेल्प यू गाइस देयर एज वेल। तो ये दोनों वेबसाइट जो हैं, यहाँ से तुम एक्सपीरियंस, लेट मी पुट द वेबसाइट एड्रेस। तो अतिक तुम उनको बताओ तुमने कैसे इस वेबसाइट को इस्तेमाल करा था।
Yeah. So तुमने ये इस्तेमाल करा था, isn't it? And you. हाँ, इसमें भी एक्सप्लोरर जो है ये एक्सप्लोरर स्किल्स बिल्डर ये वाला स्किल्स बिल्डर ये वाला था ये AWS का ये था ये वाला ठीक है राइट so basically हमने तुमको क्या दिखाया अभी हाउ टू सेट अप योर लिंक्डइन सीवी बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट्स तुम सैंपल सीवीज ले सकते हो फिर तुम एक्सपीरियंस के लिए कहाँ से तुम जा सकते हो राइट and how do you get the keywords by looking at the job AdWords समझे right so that's how you do the game yeah right now what else should we look at let's look at the questions because क्या question आ रहा है let me just quickly look at the questions एक बंदा पूछ रहा है इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या पूछते हैं उसकी भी वेबसाइट है यार सब कुछ के लिए वेबसाइट है एक मैं दिखाता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए तो बहुत सी वेबसाइट है अभी दिखाता हूँ यार अभी मेरे पास नहीं मैंने मैं कहीं डाली थी इंटरव्यू prep हाँ ये है ठीक है तो मैं अभी तो यहाँ तुमको मिल जाएंगी काफी यूट्यूब पर बहुत है इंटरव्यू सिनारियो समझे राइट तो you know try to take interview scenario based questions समझे इंटरव्यू DevOps recorded interview समझे तो अगेन उसकी भी शॉर्टेज नहीं है ठीक है उसकी भी शॉर्टेज नहीं है मटेरियल सारा वहाँ है फिर let's look at some other question can we have developer skills or we learn in DevOps course so again you know naturally I would मैंने जो तुमको recommend करा था webinars में that तुमको करना चाहिए practitioner फिर उसके practitioner बाद architect बाद developer फिर developer system operations right अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं so yes that is very good I think disagree with me if I'm wrong yeah exactly तो अब बंदा पूछ रहा है DevOps के लिए क्या चाहिए तो मैं अब DevOps का भी डाल देता हूँ chat में DevOps के लिए सॉरी तो क्या आ रहा है DevOps के जो ये DevOps engineer resume है ठीक है okay so this has a lot of things so you can see right now you don't have to know all of them you say काफी ये जो बंदा ये तो तकरीबन $2 लाख से कम नहीं मांगेगा जिस स्किल्स के पास है लेकिन it will give you an idea right so I'll put that in the chat also दूसरा side what questions asked in interviews intern so वही मैं कह रहा हूँ जो intern के लिए अप्लाई कर रहे हो एक्चुअली आई थिंक तुमने अप्लाई करा था इंटर्नशिप के लिए तो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तुमको नहीं मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है
Yeah. Yeah. So said, your CV जो कुछ लिखा है CV पर कोई चीज झूठ नहीं होनी चाहिए, right? Make sure तुमने लैब करा हुआ है, तुम्हारे इसे क्यों तुम लैब नहीं करा होगा, तुम्हारे सर में वो पिक्चर नहीं होगी, कोई रट्टा इसमें करो नहीं, it doesn't work. Labs are very important. Okay? So दूसरा क्वेश्चन है आसान वली से, what is the difference between AWS data engineer and AWS big data? I'm confused. So अब AWS में जो है, अगर तुम देखोगे हमारे जो एकेडमिक प्रोग्राम जो है, we have data analytics, ये वाला, right? ये data analytics कोर्स है हमारे पास, right? It shows you कैसे डेटा को कलेक्ट कैसे करा जाता है and all this, yeah, right? And how do you do the analytics, समझे? लेकिन जो डेटा साइंसेस जो है उसमें बहुत सी फर्क चीजें हैं, उसमें डेटा इंजीनियरिंग आता है, डेटा एनालिटिक्स आता है, ठीक है? So you also need to understand machine learning, isn't it, Atik? For to become data analyst, also understand machine learning. So machine learning के लिए भी हमारे पास AWS Academy से कोर्स है मशीन लर्निंग का। तो एक्चुअली तुमने शुरू करा मशीन लर्निंग से, isn't it? Atik, जो ये मशीन लर्निंग का कोर्स है हमारे पास, राइट? तो अभी मेरी बेटी जो है ये कर रही है और डेटा एनालिटिक्स, तो वो कर रही है अभी यही चीज, राइट? तो ये जो है फाउंडेशन कोर्स है मशीन लर्निंग का, राइट? और इसमें सारा कैसे ETL करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, लोडिंग डेटा, राइट? कैसे सेज मेकर, याद है सेज मेकर तुमको? बहुत टाइम गुजारा होता है। एग्जैक्टली, ये सारा डेटा क्लीनिंग और ये सारी चीजें, तो ये चीज, तो मैं तुमको अगर बिग डेटा में जाना चाहते हो, पहले मशीन लर्निंग करो, फिर मशीन लर्निंग के बाद डेटा एनालिटिक्स करो, फिर डेटा साइंसेस, राइट? सो दैट वुड बी द पाथवे अगर तुम उस तरफ जाना चाहते हो, समझे? I hope I've answered your questions, right? So remember, हर चीज के लिए तुमको ऑफिशियल सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम, and then the rest is about experience, building that experience. Main employer जो है, he'll be quite happy, वो जानता है उसको सर्टिफाइड बंदे नहीं मिल पा रहे हैं हर जगह, समझे? तो एज लॉन्ग तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेशन है आर्किटेक्ट या डेवलपर की, you can then put all of this skill set on top, समझे? Isn't it a thing? You don't have to have every certification, you know what I'm saying? Right? Exactly. So let's look at the other question. बंदा पूछ रहा है, वेबसाइट पे टू न्यू इंटर्नी एम्प्लॉइज नॉट, देखो जो मैंने जो वेबसाइट डाली है इज अबाउट फ्री वर्चुअल इंटर्नशिप ग्लोबल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर तुम इंटर्नशिप अप्लाई करो तो नौकरी मिलती है तकरीबन, आई थिंक आजकल सैलरी कितनी, 40,000 से 60,000 होगी इंटर्न की सैलरी, क्या आजकल सैलरीज इंटर्नशिप की? 40 तक है, 40 तक है। तो एक बार लेकिन एक बार तुमको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, फिर कितनी सैलरी चल जाती है? 60-70,000 हो जाती होगी। Yeah. Okay. So मोहम्मद पूछता है, is there required any degree for internship like graduation or not? Generally speaking, internship के लिए in the West डिग्री की जरूरत नहीं होती, पाकिस्तान में मैं श्योर नहीं हूँ अगर डिग्री मस्ट है, लेकिन I don't think, I mean degree I don't think the must. In the end लोग देख रहे हैं तुम्हारी एक्टिविटी। Yeah, so what they got? So I don't think that's a must, so that's okay. Mohammed. So Mohammed पूछ रहा है, I do not have coding or developer background. So again, Mohammed, I think you should wait till हमारा जो सारा course है teaches you all those things. So you should speak to the course advisor, and they can guide you. Mohammed Atik Beg question, my background electrical engineer has joined and has joined the networking field. So I don't know what the question is.
Sorry, but I think you've not asked the question, so I'm not sure. So, एक बंदा पूछता है, does certification are higher than degree or we need degree? देखो मैंने कहा डिग्री जो है, अगर तुम यूरोप में आ रहे हो तो डिग्री इज अ वे टू गेट द वीजा, राइट? पाकिस्तान में डिग्री के बाद आई डोंट मैंने कभी नहीं वैल्यू करी कोई डिग्री को, राइट? मैंने सिर्फ डिग्री को सिर्फ इस्तेमाल करा है टू गेट वीजा, राइट? समझे? तो दैट्स माय व्यू ऑन डिग्रीज. इससे डिग्री जो है एकेडमिक होती है, समझे? Academic does not teach you practical stuff. Certification is about professional stuff, right? So that's my answer to you there. So does, okay, is learning Linux important? देखो, Linux जो है is the most common operating system in the world. I think 80% कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं Linux. तो मैं कहता हूँ हर बंदे को पैदा होना चाहिए Linux के साथ, समझे? तुम्हारे स्मार्ट टीवी, तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारी गाड़ी, हर जगह में Linux है, right? So Linux is the must. What do you think, Atik? Exactly. Yeah. So Linux सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर तुम 10 से 15 मिनट हर रोज 2-3 कमांड Linux के सीखो, तुम 6 महीने के अंदर तुम you become very proficient, isn't it? और 10-15 मिनट क्या चीज है एक दिन में, समझे? Right? तो एक बंदा पूछ रहा है, जूनियर पूछ रहा है, which Linux flavor is good for AWS job? I mean, RedHat Linux is very good. RedHat Linux is बहुत powerful certification है. You know what I'm saying? So अगर सीखना है, अगर properly करना है, तो yes. एक बंदा पूछ रहा है, Genesis plan to reduce course fees due to floods in Pakistan for Pakistani students. I don't know अगर हम लोग Genesis की फीस रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बता देता हूँ. UK में जो हमारी फीस है पैकेज के लिए इस 7,000 पाउंड, तो 7,000 पाउंड पता नहीं कितने रुपए हो गया. 7,000 कितना हुआ? 7,000 पाउंड 20 लाख रुपए अमराद. हाँ, तो हम लोग 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं यूके में और आवर कोर्स. तो अगर तुम 20 लाख से कम कर रहे हो पाकिस्तान में, तो तुमको काफी अच्छी डील मिलेगी, राइट? आई एम नॉट श्योर यूके में पाकिस्तान में क्या फीस है. आई थिंक 60,000 रुपए ऐसी कुछ है. हमारी मुराद वी ऑलरेडी हैव, जो हमारे साथ बच्चे वैसे कर रहे हैं ना, दे ऑलरेडी नो, बहुत ही मिनिमल सी हम अपने फी रखी हुई है ऑलरेडी. तो वही देखा मैं, यूके की फीस जो है 20 लाख है, राइट? और वो we need to make sure the standard हम जिस पे हैं, हम सिर्फ वो नहीं कर सकते इस तरह के बस कोर्स करवा दिया. We have to actually deliver as well. तो हमने ऑलरेडी उसको we had the discussion. आपको पता ही है जब हमने फीस वगैरह की थी, तो जो प्लान था कि हम एक बेस्ट वे में जितना एक मिनिमम में डिलीवर कर सकते हैं, तो वही. Yeah. So anyway, so the point I'm trying to make is that the deal you're getting in Pakistan, we don't give that deal to any other country in the world. That's the point I'm trying to make, right? You know, but again, we're not forcing you to study with us. We are saying to you that, you know, there's YouTube, there's Udemy, there's whatever, right? But do something. Don't just sit there, right? It's costing you money if you're not getting the skills, right? So I think I've answered all the questions. One of the most important questions I would say is communication skills. In fact, I think, what do you think about communication skills? Is that important?
Yeah. So मैं बहुत I keep on saying this in every webinar that please, और मैं अपने अंग्रेज स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, मेरे अंग्रेज स्टूडेंट्स की भी बड़ी कम्युनिकेशन बड़ी गई है, right? It's not only पाकिस्तान में, but it's so important, yeah. तो उस पर थोड़ा सा टाइम और एफर्ट स्पेंड करो, right? You know, it's not complicated, right? In fact, I think मुझे याद है जब तुमने शुरू करा था तुम्हारी प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ कुछ लेकिन अब तो काफी तुम्हारी बेहतर हो गई, so you've been working on it. It's good, you know. So because in the end, you know, अगर तुमको 2-3 करोड़ कमाना है, yeah, you have to have that communication skill, right? वही तो मैं एग्जांपल दी थी, जो सारे इंडियन लोग जो मैं मिलता हूँ वेस्ट में, इनका एक्सेंट होता है इंडियन, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है की, राइट? दे वर्क ऑन इट, राइट? और इसका भी कोई फ्री कोर्सेज हैं ब्रिटिश काउंसिल से और बहुत सी कंपनी के, मैं भी लिंक में डाला नहीं है तो मुझे याद नहीं लिंक, लेकिन बहुत सी फ्री बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्सेज हैं, राइट? So I think I've covered all the questions, and you have, if कोई भी question अगर है, please ask now, and we will answer it related to the job market. But I said, most important thing that you should get out of this is you need to have the right technical skills. You should make sure before you write your CV that you have some decent experience. वो experience तुम आराम से AWS website से मिल सकता है, yeah, and you know, virtual internship चाहिए, global नाम डालना अपने CV पर, I've given you that also, right? But you should continue your courses. हमारे पास course advisors हैं जो आपको help कर सकते हैं, right? Or you can do it yourself. So basically कोई reason नहीं है that सारे लोग जो इस कमरे में हैं आज, that you know 8-9 महीने में तुम लोग 1 लाख नहीं कमा रहे, तुम्हें कोई रीजन नहीं है, समझे? राइट? लेकिन तो तुम बैठे रहोगे 3-4 साल बाद इसी लेवल पर, you're going to go nowhere. समझे मेरी बात? Right? Roger, do you want to say anything? Well, right then, Murad, I just wanted to say thank you very much, आपका और मुनीब का, जिन्होंने actually, I don't know बाकियों का, but I really enjoyed this session. Hi there, I'm Samuel, and I'm here to क्योंकि walk मुझे ये you सारी through some जर्नी of the आपकी नजर आ AWS रही थी interview when I questions started. which we find are And important. And our hope honestly, is that you would use this देखो material in इस your तरह चीजें क्लियर अगर हमारे पास होती फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि कोई बंदा हमें स्टार्टिंग में ही बता रहा हो कि क्या करियर है और कैसे है, तो वी कुड हैव एक्चुअली अचीव्ड मोर. सो दीज आर द थिंग्स जो आपने बता दिए. बाकी जो काम है या जो करना है, जैसे आपने भी क्लियर किया कि हमारा मकसद है इंशाल्लाह कि आप लोग एक अच्छी जॉब करें पाकिस्तान के लिए, आउटसाइड पाकिस्तान ओवरसीज जाके करें. वी आर नॉट रियली ट्राइंग टू सेल आवर कोर्सेज, आपको हमने फ्री रिसोर्सेज बताए, और बट आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो है वो काम करें, कमाएं, डॉलर कमाएं, पाउंड कमाएं, यूरो कमाएं, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी फैमिली का करें, मुल्क के लिए आप जो फायदेमंद हो. तो बस इन्हीं के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल ऑफ यू हु जॉइंड अस टुडे. और I mean, what I would like to say is, on the final thing, that ये जो जमाना है अभी, मैंने अपनी पूरा जिंदगी में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी जो आज मैं देख रहा हूँ, राइट? सो ये यू कैन नॉट वेस्ट इट. ये टाइम जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतना तुम अपना फ्यूचर इतना चेंज कर सकते हो, और उस फ्यूचर के साथ तुम अपनी पूरी फैमिली चेंज करोगे, समझे? यू नो, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ ये सारे जो नए नए इंडियंस आ रहे हैं, वो जाके टिकटॉक पर वो वीडियो बनाते हैं. देखो अभी मैंने जाके अपना पहला घर खरीदा था पाकिस्तान इंडिया में, राइट? तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वो टिकटॉक वीडियो देखता हूँ. तो मैं देखता हूँ यार कितने यंग इंडियन आते हैं, और यू नो बेकार किसी पैसे के, और फिर अपना घर खरीद रहे हैं, अपने माँ बाप को भी दे रहे हैं घर का, यू नो, पहले सुनिए, राइट? So this is what I would say to you, that you know, please take this advice on board, and you know, 1 year from today, I would like to see all of you in very high paying jobs. What would you, anything you would like to say, Atik, before you before we go?
Yeah, thank you very much. You know, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ तुम कब you'll be ready to start working with me again. You know. So मैंने अतीक के लिए मैंने एक WhatsApp ग्रुप बनाया है अतीक के लिए, so keep हर 6-7 महीने बाद मैं उसको पिंग करता हूँ देखने के लिए कहाँ you know, so inshallah, I can't wait. So yeah, anything else from you guys? Any other questions? Right. So Mohammed says, please instruct how we can land our first job as DevOps engineer with AWS Solution Architect plus developer with lab experience. So wait a minute, you explain kara, yeah? Watch the recording again, समझे? Right. So naturally, जब तुम लोग ने जब खत्म कर चुके हो DevOps engineer or system operation engineer, so naturally, मैंने Rogers already कहा हुआ है that once people are done DevOps engineer and systems engineer, please make sure check of course उनकी communication, अगर उनकी communication अच्छी है, please send those CVs to me. Right, I would like to look at those because naturally हम लोग outsourcing game में भी हैं, so we are all the time looking for good DevOps people. समझे? So if you're a good DevOps engineer by that time in 6, 7, 8 months, then yes, I would be very interested in seeing your CV. But I told you, you need to be the best of the best. ये सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, मेरे हाथ में नहीं है. हम लोग सिर्फ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं गाइडेंस और ट्रेनिंग, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ तुम ही कमा सकते हो. You know what I'm saying? So the more labs you do, the more projects you do, that will get you the experience, right? And that will make you worth what you are. Okay, so that's my answer to you. Okay, guys. And if you want to have any more questions with me, sure, you can contact Alia, Sumia, and all the course advisors, and they will forward your questions to me, right? If you need to get hold of me, Samjhe? So I'm always here to mentor anybody. So okay, and we will call it a day. Okay, inshallah. Thank you, brother. Thank you very much. Really appreciate that. बहुत शुक्रिया brother आपका जी. Thank you, and all of you, thank you very much. आपने join किया, team as well. Thank you very much. Okay, thanks. Okay.